कर दिया तुमने? पीछे से फोटो ली है? हाँ ले यार जगह नहीं है मीडिया कवरेज के लिए। तो इधर किसी को ना बैठने दी यार, उधर से कह रहा कोई भी नहीं, इधर तो हिलना नहीं दे। ले इधर आगे से ले, आगे चल रही है, इधर भी घुमा इधर। हाँ मोबाइल कितना वा उधर तो बंदा बात है इधर यार थोड़ा साथ साथ हो गया यार, उधर से जो बैठ गया मेरी चीज कवरेज नहीं होगी। मैंने इतने बैल आंदा तो किधर हो गया थोड़ा यार कपड़ों पे तना चढ़ो मेरे। जगह रखी मैं गया न्यूज कर ले। ये हमारे मीडिया सेल के बंदे हैं। भाई ने मुझे कहा चल रहा है? हाँ बैठ जाओ, नहीं है यार, बैठ जाओ। और सच पहनती है यार, कैसा थोड़ा इधर करो यार, इधर उधर सच पहनती है यार तुमने सारी। उसको रास्ता मोबाइल कितना बंद होगी थोड़ी बात है। Can you start, sir? Beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum and good morning. We heartily welcome all of you present here. I am Asghar Sharif with my co-host. On behalf of Cholistan University of Veterinary and Animal Sciences, today we are fortunate to have our guest speaker, Dr. Basit Khurshid Kipra, from the most wonderful Institute of the Medical College, Bahamas. Our respected Dean, Faculty of Veterinary Sciences, Dr. Mazhar Ayaz, all the faculty members, senior teachers and students.
spreading a spirit of enthusiasm and togetherness. Antimicrobial Awareness Week aimed to increase awareness of global antimicrobial resistance and to encourage best practices among population, health workers, policymakers, and in order to overcome the emergence of antimicrobial resistance diseases and antimicrobial resistance. The World Antimicrobial Awareness Week with the slogan of Antimicrobial Handle with Care, and it has the theme of to spread awareness and stop resistance for humans as well as the animal sectors. The consequences of antimicrobial resistance on health and health-related sectors is extraordinary. It has been estimated that multi-drug resistant infections cause approximately 1 million deaths worldwide each year. It is the mark of our tradition to invoke the Allah Almighty in the beginning of an important event. My words, my soul are the witness of the oneness of glory Allah, whose glorification cannot be described in words. For the recitation of few verses of Holy Quran, I would like to call upon Hafiz Naeem from DVM first semester to come on the stage. चल रहा है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Jazakallah khair. We all feel blessed indeed. No doubt the touch of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam healed broken bones. I would not praise Muhammad sallallahu alaihi wa sallam with my words. Rather, my words were made praiseworthy by Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. I would like to call upon Muhammad Irfan Fani from DVM 5th semester for Naat Rasul Makhool sallallahu alaihi wa sallam. सारे पहले
मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ। आंसू नदामतों के हैं चश्मे तर से जारी, आंसू नदामतों के हैं चश्मे तर से जारी, छुप छुप के रो रहा हूँ, छुप छुप के रो रहा हूँ दरबार मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ। किरणें निकल रही हैं मेरे वजूद से भी, किरणें निकल रही हैं मेरे वजूद से भी, खुर्शीद बन गया हूँ, खुर्शीद बन गया हूँ दरबार मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफा में। सुभान अल्लाह। Jazakallah khair. I would like to start today's event on this glorious morning by introducing our respected dignitaries. Our guest speaker is Dr. Wajid Khurshid Sipra, Associate Professor, Department of Microbiology, Quaid-e-Azam Medical College, Bahawalpur. Put your hands together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Muhammad Wajid Khurshid Sipra, my name. I am working as Associate Professor of Pathology, Consultant Microbiologist and Consultant Pathologist in Quaid-e-Azam Medical College. I am graduate of the Quaid-e-Azam Medical College. मेरी ये खुशकिस्मती है कि जहाँ से मैंने अपनी तालीमी मदारिज तय किए वहीं पे मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है अपनी
खिदमत मुयस्सर करने का या मुझे वहाँ पे मौका दिया, और ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। सुनने में तो यही आया सर, ऐसा हो सर कि आप खुशकिस्मत हैं कि जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आपने अपनी ज़्यादातर तालीम हासिल की और आप वहीं सुकूनत अख्तियार करते हैं, और उस एरिए में आप अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो अपनी महारत हैं, और वो उनको अगर आप मुहैया करते हैं तो आपके लिए भी खुशकिस्मत है, और जो उससे आपसे जो हासिल करेंगे उनके लिए भी है। कुरान का पहला लफ्ज़ कि जिसमें जो हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है उतरा, और वो हमारी लर्निंग की, इकरा, यानी कहा गया कि पढ़ उस रब के नाम से जिसने तमाम मखलूक को बनाया। जब ये लफ्ज़ उतरा और इसके बाद इल्मियत के जो है वो दरवाजे खुल गए, और मेरे पे जो पहला दरवाज़ा वो खुला, जिसको हम एक बेसिक, उसके पीछे तो जो भी आपकी एजुकेशन होती है, हमारे जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं, उसमें सबसे पहला क्रेडेंशियल्स होता है कि आपकी मैट्रिकुलेशन जो 10 ईयर एजुकेशन है वो कहाँ से है। I am a son of this state of Bahawalpur. I still use the word the state of the Bahawalpur. Many times my father has restricted me not to use. Definitely it is a state. और ये एक स्कूल है, टेक्निकल हाई स्कूल, यहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन की। एससी कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। टाइगर्स मेडिकल कॉलेज जो है वो मेरे लिए एक दरसगाह बनी कि जो मेडिकल साइंसेज की जो मैंने अपनी इल्म है वो यहाँ से हासिल किया। उसके बाद सफ़र तय होता गया, सफ़र पहुँचा कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान, जहाँ से MCPS इन पैथोलॉजी, एंड देन उसके साथ जो है साथ ही सफ़र जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से जो है इन DCP डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी। यहाँ मैं बयान करता जाऊँ, यहाँ पे मैंने अपनी एक यूनिवर्सिटी को नहीं सॉरी पता नहीं कैसे रह गया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ हम अटैच थे। नो आवर मेडिकल कोर्सेज इज नाउ अटैच विद द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। सफ़र तय होता गया और पहुँचे बेसिक मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट कराची, and it attached with the Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi. And the reason behind I joined this Basic Medical Science Institute, that institute is attached with the Indiana University, USA, up to the 1969. Still it is nowadays, still the coursework and the curriculum is adopted by as laid down by the Indiana University that stopped basically in 1969. At that time, the former president at that time, I think before that, the Sadr Ayub basically finished the link with this Indiana University, and I learned the basic the microbiology from this Basic Medical Science Institute, JPMC Karachi, and then I reached the King Edward Medical University as enrolled as a PhD candidate, और still it is awaiting, और डेस्टिनेशन तो बहुत सी है। फिर डेस्टिनेशन पहुंची उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का में, ठीक है, और साथ में फिर द सिटी ऑफ द तबूक, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कुआं देखा कि जिस कुएं पे आपने वो अपना लाबे दहन फेंका था, और तबूक में रहा। और डेस्टिनेशन तो जो हायर एजुकेशन के हवाले से है, ठीक है, हाँ, अभी तक स्टिल जो मेरी एक डेस्टिनेशन है ये मदीना की यूनिवर्सिटी है सर, ठीक है ना। यहाँ की डेस्टिनेशन जो है वो ख्वाब, जैसे वो कहते हैं कि एक मुसलमान का ख्वाब हो कि अगर उसकी मौत आए तो उसका मदफून जो है वो जन्नतुल बकी में होना चाहिए। तो देखें कहाँ तक सफ़र पहुँचता है। सफ़र शुरू हुआ और वहाँ से सफ़र होते हुए एज ए वन हेल्थ प्रोग्राम पे सर की तो मुलाकात होती थी, बहुत सारे हमारे आपके लेजेंड फैकल्टी, और आई थिंक सो मुझे याद है कि कोई एक बैच जो है सर विजिटिंग के लिए भी आप लेके आए थे, तो वर्किंग एज ए थोड़ा सा मैंने आपको अपना तारुफ करा दिया। ये देखिए वो रास्ता है, रास्ता बनाने के लिए जुस्तजू करनी पड़ती है, और अगर आप इस एक एनिमेटेड पिक्चर है, इट इज बेसिकली
the introduction of all my lecture. ठीक है, आपको कहीं पे मुज़ाहिमत आती है। अगर आप ये देखें कि एक साइड पे मुज़ाहिमत जरूर है, मगर at the other end, at the second end, and these different ends, it is joined, it is stopped, the resistance is stopped. मैं लफ्ज़ शुरू करता हूँ मुज़ाहिमत का, कि मुज़ाहिमत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जो मखलूक है, चाहे वो चरिंद है, चाहे परिंद है, चाहे वो मखलूक़ात में जो भी हैं, वही ह्यूमन बीइंग्स have the very strong resistance. Even then, if anything is our against anything, we just give the spoken में या हम अपने forcefully भी। तो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स है, वो भी रेजिस्ट करता है, वो भी पीछे नहीं है किसी से। कहते हैं कि जी रेजिस्टेंस। So this is the my laboratory अपना Department of the Pathology Microbiology section. This is recent Molar Hinton agar media show the different disk diffusion, show the activity. If we see this plate, we observe, वो कहते हैं कि को कहा की कहानियां जो है ना वो भी पुरानी लगेंगी। अब पेश क्या किया जाता है, वो कहते हैं होता कुछ है, बयान कुछ और किया जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि आपके बातिन में कुछ है, आपके जाहिर में कुछ है। तो हम जाहिरी तौर पर कुछ चीजों को फुल फ्लैश मान लेते हैं, कहते हैं कि ये 100% है, बातिन को नहीं देखते। ये एक पिक्चर है जनाब, बहुत सारी है, मैं आगे भी दिखाता हूँ। दिस इज अनदर वन, दिस इज अनदर वन। आप इनमें से किसी को भी देखें, और इंसानी फितरत में ये है कि अगर वो जल्दबाजी करता है, अगर वो प्रॉपर प्रोटोकॉल से नहीं चलता, जिस तरह हमारा चलने का तरीका है, खाने का तरीका है, पीने का तरीका है, अगर इनमें से हम इन तीनों चीजें हमारी से हर इंसान बाकी भी हैं, खाने में अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो वो फंस जाएगा, पीने में जल्दबाजी करेंगे वो नाक से निकल आएगा, चलने में जल्दबाजी करेंगे नीचे नहीं देखेंगे तो वो गिर जाएगा। तो और मैन पावर जो है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैब में या कहीं पे भी जो है वो इंसान की जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट करती है, और वो अफेक्ट क्या करती है कि आप प्रॉपरली चूज आपकी कहने के जो मैटर है वो प्रॉपर नहीं कर पाते, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर आप उसको जल्दबाजी करते हैं। हम में से कितने लोग हैं माशाल्लाह हमारे पास यहाँ पे जेंडर पे अगर देखें तो अगर काउंट करें तो आई थिंक इट इज 45 to 48 to 52% जो है जेंडर बेस्ड इस वक्त जो है ना हमें कह लें कि डिफरेंस नजर आ रहा है। मैनी ऑफ आवर गर्ल्स बेटर नो, बल्कि बात यह है कि मर्द भी बड़ा अच्छा खाना बना लेते हैं। खवातीन में भी मुझे बताएं या गर्ल्स बताएं कि खाना बनाने में अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो वो खाना सही नहीं बनेगा, ठीक है, या तो अंडर कुक रह जाएगा, ठीक है, या फिर कुक ही नहीं होगा, वो खाने के काबिल भी। और फिर उसमें मसाला जात की एक आमेजिश, एक मसाला जात की एक प्रॉपर प्रोपोजिशन प्रोपोर्शन जो है, और इसी तरीके हमारे पहनावे में भी है। तो होता ही है कि आगे में जो इस वक्त फेसबुक पे भी चल रही है और इस वक्त जो है एलैबोरेट किया जा रहा है, मर गए कपड़े, बिल्कुल है, प्रॉब्लम मौजूद है, मगर उसको इतना हद तक एडवांसली कह लेंगे शो कर दिया जाता है, वो आइसबर्ग के तरीके पे होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। अब देखिए, ये देखें, अब इसमें एक से दो जो ड्रग्स हैं, दैट ड्रग्स आर बेसिकली शो द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ड्रग्स, ठीक है। और इसमें भी जब मैंने इसको देखा तो इसमें इसकी प्रॉपर रेगुलेटिंग, अगर आप ये देखें कि ये इसका जो बना हुआ था, इसका लॉन बना हुआ था, ग्राउंड बना हुआ था, एंड आपको फिजिकली भी नजर आ रहा होगा ये डिफरेंट है। होता ही है कि हम में से बहुत सारे अफराद जब हम काम कर रहे होते हैं तो इंडिपेंडेंटली आजकल जो एक वबा आई हुई है मोबाइल फोन की, तो गानों में भी लगा हुआ है, तो वो अक्सर मैंने मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। उसके बावजूद ये देखें, ऑब्जर्व ये हुआ कि जी उस वक्त जो लगा रहा था वो अपने किसी और काम में भी मसरूफ था, और उसकी देखें यहाँ पे एक मिरर प्रॉपरली आ गया कि लॉन जो है वो आया, और इस वजह से ये जो ड्रग्स थी ये मजबूर हो गई, उनको वो एरिया ही नहीं मिला पेनिट्रेशन का। ये भी अगेन
Another one, इसमें typical resistance show हो रही है. हमने resistance में हमने पढ़ा होगा कि single drug resistance है, double drug है. If more than 2 drugs are observed in a resistance, that is called as an MDR, multi-drug resistance. If more than other than, then it is applied as the XDR. And nowadays, it is not obviously seen the TDR. TDR is in somewhere now observed in a Mycobacterium tuberculosis, and the next, the bacterial disease, the enteric fever, the typhoid. Typhoid तो बगैर confirm किए हुए, अगर एक दिन बुखार हुआ तो हमने एंटीबायोटिक शुरू करा दी बगैर उसके 4th generation. It is a policy that observed all over the world, in many other cities, many hospitals. Antibiotic prescription policy is a valid document, as a valid policy. Antibiotic is not allowed for prescribing anybody without the confirmation of the culture and the sensitivity. And due reason, nowadays we observe the antimicrobial resistance, we observe due reason. It is against the policy, and that is the way that type of the resistance is observed, and patient is taking many drugs. I think 1 week before, one call is received from the cardiac center Bahawalpur. One male is admitted in the cardiac center from the last 90 days. He had the problem of some valve, and 3 or 4 drugs he used, and daily the fever is there. And when I visit, and as a microbiologist, within 4 to 5 days, I just visit, I stop all the antibiotics, only the one spike of the temperature. उसको सिर्फ दिन में एक दफा टेम्परेचर होता था सर, और वो भी 99, 100 से भी अबव नहीं. वो ड्रग फीवर था बेसिकली. उसकी TLC 37,000 थी. जैसे ही उसको 3rd डे पे उसकी वो रिपीट कराया CBC, उसकी CBC यानी जिसमें तो WBC TLC काउंट 17,000 पे आ गया सर. 37 से 17 पे हमने वो ड्रग छोड़ दी. उसका फीवर, उसकी हाइड्रेशन बेहतर कर दी, उसकी हाइजीन बेहतर करा दी, उसकी डेली उसका जो है पूरा बॉडी का वॉश कराया विद स्पॉन्जेस, और उसकी क्या हुआ, उसकी न्यूट्रिशन बेहतर करा दी. वो कहते हैं कि सिर्फ दवाई पे इक्तफा नहीं करना, हमने जो डाइट है, अपनी न्यूट्रिशन है, उसको अगर हम प्रॉपरली लें तो हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी है, ठीक है, इम्यूनिटी जो है वो इतनी बूस्टअप हो जाती है कि जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं. तो नेचुरल इम्यूनिटी इज ए गुड फॉर अस. तो अब वो पर्सन जो है, वो पेशेंट जो है, वो उसको हमने लाहौर सेंड कर दिया इन्होंने, कार्डियक सेंटर ने. एक तो प्रॉपर हैंडलिंग, फिर ये है कि प्रॉपर टीम वर्क. टीम वर्क में मैं मिसाल देता हूँ इस हाथ में अल्लाह ने हमें 5 क्यों दिए हैं, 4 दे देते, 3 दे देते. हर एक का अपना जो है वो यहाँ पे इसकी जो है वो वर्केबल है. और टीम वर्क के तौर पर जब हम नहीं चलेंगे, और आज मैं आपके साथ जो ठहरा हूँ और आपने मुझे इस बात की मुझे महसूस किया कि आप आए तो ये स्प्रेड करें. एज ए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट डेफिनेटली बैक्टीरिया में भी माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट में भी है, सारी चीजें, हर एक को बीमारी होती है, और उसमें वही वायरसेस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, फंजाई भी हैं, ठीक है. वेरी लिमिटेड आई थिंक पैरासाइट्स इन प्लांट्स, बट एनिमल्स में है जो कि फिर फर्स्ट कोर्स के तौर पर इफेक्ट करते हैं. तो ये देखिए ड्रग रेजिस्टेंस है, ये उठाई उससे ये आ रहा है कि जी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में कि सूडोमोनास आर्जिनोस आगे. ये एक पिक्चर आजकल जना वायरल हुई है कि जी 1991 में ये हालत थी और 2021 में. मैं कहता हूँ कि जी ये रिवर्स हो सकती है अगर आप ये देखें. क्या ये 2021 की नहीं, अब उसमें उसका अगर आप इसको देखें कि इसका लॉन बेसिकली जब भी हम ऑर्गेनिज्म जब रजिस्टर कर लेते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक पे, मॉर्फोलॉजी पे, देन वी इनॉकुलेटेड द कॉलोनी with mash, with the McFarland turbidity solution, with the wavelength, with the turbidity matter, and after the inoculation with a control. हमारे यहाँ अल्लाह ने कंट्रोल रखा हुआ है. हम अपने पे कंट्रोल रखेंगे तो बचे रहेंगे. इसी तरह अगर हम लैब के मामले में, रिसर्च में भी देखें, केस कंट्रोल स्टडीज हैं,
ठीक है। तो केस कंट्रोल स्टडी में या एक्सपेरिमेंटल स्टडी में डेफिनेटली कंट्रोल आपको लगाना पड़ता है। तो इसकी अगर आप ये लॉन देखें तो इसमें देखें ये हाईली इनोकुलम है, ये हाई इनोकुलम है, ये देखें। अगर इसका इनोकुलम देखें तो इससे डिफरेंट है। तो जो कहते हैं कि दिखाया जाता है वो होता नहीं। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो बैक्टीरिया भी मोस्टली इस वक्त बैक्टीरिया के बारे में सुनते हैं, मगर नहीं, पैरासाइट्स हैं, फंजाई हैं, वायरसेस हैं, ये भी अपने आप को क्यूमुलेटिव इफेक्ट के हवाले से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और इनके बॉडी के अंदर जो जीनोम मौजूद है या क्रोमोसोम है या प्लाज्मिड है, व्हाटएवर द इंटरनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी दे हैविंग डेवलप्ड द रेजिस्टेंस, इसका मेन वजह हमारी फ्रीक्वेंटली इनएप्रोप्रिएट ड्रग्स, और अगर किसी को हल्का सा जिस्म गर्म हुआ है तो हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो फार्मेसीज हैं, वो फिर हेल्थ एजुकेशन नहीं है। हमें से कितने अफराद हैं, अभी भी ऐसे होंगे, आप अगर डालें तो मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं कि जी मुझे ये है तो आप दे दें, दवाई दे दें। तो वो इनएप्रोप्रिएट जो है वो यूजिंग ऑफ द ड्रग्स है। WHO क्या, मैं कहता हूँ कि WHO खुद है, we itself having the controlling authority, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो रेजिस्टेंस है क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एक हम डायग्नोज कर लेते हैं। अब एक चीज हमें पता लग जाए कि जी ये है, अब उसको ट्रीट करना है, और उस ट्रीटमेंट के दौरान होता ही है कि पेशेंट जो है जब पहुंचता है हॉस्पिटल में तो वो इतना उसकी हालत बिगड़ चुकी होती है सर कि वो मेरे ख्याल में 6 से 8 किस्म की एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके आया होता है। जो हमारे यहाँ कह लेंगे हमारे विलेजेस में जो हरफ आम में कह लेंगे जो एक टाइटल, मैं तो अपने मेरे डॉक्टर फ्रेंड जो है डॉक्टर असम साहब, ठीक है, इन्हें कहता हूँ कि सर बात ये है कि हमने तो फिर ऐसे ही जो है ना, अयाज साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं, हमने कितनी मेहनत करके अपने नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगाने के लिए इतनी पढ़ाई की, ठीक है ना। एक ऐसा शख्स कि जो अगर किसी वार्ड में काम करता है या किसी को उसे पता लग गया कि जी लिवोफ्लॉक्सासिन जो है वो या इसी तरह की कोई और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाई है, वो इसके लिए है। होता क्या है, देता वो खुशनसीबी से है मगर बदनसीबी बन जाती है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास रिलैप्स आ रहे हैं, प्रॉपरली सर्जरी बेहतरीन हुई, एंटीबायोटिक इनएप्रोप्रिएट, इन्फेक्शन हो गई, प्रॉपर डिटेक्ट ना हुआ तो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ती गई। वो कहते हैं कि मर्ज बढ़ता गया, जू जू, वो लफ्ज ऐसे तो नहीं देखे वो था, ऐसे ही है ना सर, जू जू दवा की मर्ज बढ़ता गया। तो इसी तरह जो शायर हैं उन्होंने भी इस बात को महसूस किया, और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि हम एक और भी एक मिथ कहते हैं कि जी प्रिवेंशन जितनी भी कर लो होना हो ही आएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब जो हमारे एंटी माइक्रोबियल जो रोल है उसमें हमें प्रॉपरली आइसोलेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली जब तक हम उनको डेफिनेटली दे आर द यूनिक वन, दे हैव नॉट ए कॉमन यूज, जब तक हम इनको ये उसी तरीके पे है कि हम में से गर्मियों में कौन स्वेटर पहन के फिरता है, स्वेटर हम सर्दियों में पहनेंगे, या इसी तरह जो जो ड्रेस है उसी हवाले से पहनेंगे। तो इम्पैक्ट क्या है ड्रग रेजिस्टेंस का? इम्पैक्ट ये है कि जब तक हम प्रॉपरली, फिर ये कि मल्टी ड्रग्स भी जो हैं वो ड्रग्स को दूसरी दवाई को जो है ना वो धकेल देते हैं। ये उसी तरीके पे है कि 6 आदमी इकट्ठे गुजरने हैं, गुजरने का रास्ता 4 का है, ठीक है। वो अक्सर उसे गुजारते हुए उसे ये जैसे हम ठहरे हुए हैं उसे कहते हैं भाई इधर हो जाते हैं। ये ड्रग्स भी ऐसे रिप्लेस कर देती है। फिर हर एक की शॉर्ट लिव है, हर एक के इंटरैक्शन है, तो उनको भी देख के दिया जाता है कि जी अद्वियात जो है वो एक दूसरे के साथ भी, जैसे हमें कन्फ्लिक्शंस होती हैं, हमें आपस में अनाद होता है डेफिनेटली, क्योंकि वादिये नुमान में जो रूहें पैदा कर दी गई उनमें कहा गया, बता दिया गया कि जी कौन कौन जिनमें मोहब्बत होगी, किन में अनाद होगा, किन में दुश्मनी होगी, ठीक है। जो कंधे से हुए होंगे उनमें अनाद भी होगा, जो कंधे बैक से बैक जुड़े हुए होंगे इस दुनिया आखिर यानी जब तक वो बगल बजेगा उस वक्त तक तमाम रूहें यहाँ तक आ चुकी हैं। अनाद दवाइयों में भी है, हमें एहतियात करनी पड़ती है कि एक दवाई को, जिसको हम कहते हैं कि ड्रग इंटरैक्शन, एक दवाई दे रहे हैं तो उसे देखना होता है कि जी दूसरी देनी है नहीं देनी।
इसी तरह अगर आप देखें इस वक्त सब 3 एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एडवाइस किए जा रहे हैं, वो कहते हैं कोई तो लगेगी। तो इम्पैक्ट जो है AMR इस वक्त जो है हमारे पास डेथ जो है एनुअली अगर हम देखें वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड वाइड जो है हर कंट्री में अफेक्ट हो रहा है। 2050 तक इसके बारे में है कि जी अगर हमने इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया तो देयर इज many रेजिस्टेंस अकर अगेंस्ट मेनी ड्रग्स। इसको कंसाइड नहीं कर सकते बेटा, ये आपकी ये या वो नीचे वाला जो आपका ये आप करने नीचे आता रहेगा क्योंकि ये बॉर्डर इधर से आ रहा है क्योंकि वो नीचे आ रहा है। नहीं इफ यू क्लोज दिस वन आई थिंक द सराउंडिंग आपकी जो बैकग्राउंड है वो आप पे आता है। मैनुअल है। अच्छा चलिए नो प्रॉब्लम ओके कोई बात नहीं होता हो गया। यहाँ पे मुझे याद आया साहब कि वो कहते हैं कि हिम्मत मरना मदद, जब अगर हम हिम्मत करते हैं जब हम सोच लें ठीक है तो उसमें ये है। और बैक एंड नाउ आई थिंक हमारे लिए गुड जो है वो बैकग्राउंड जो है वो अच्छा आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, अगर नहीं होता तो हेडिंग्स हो जाता तो इट्स गुड, ना हो तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बस आप कर दें। अच्छा इसको देखते भी याद आया कि सर वो कंटिन्यूअस जिसको थेरेपी कहते हैं ना, एक कंटिन्यूएशन जो कहने के कोऑर्डिनेशन है वो जरूरी होती है। बार हमें याद कराना पड़ता है कि अभी रास्ते में होता है, अभी मैं ये कितना सफर रह गया है, क्योंकि तो ये भी उसी तरीके पे होता है कि बार बार वो ट्विचिंग देनी पड़ती है, उनको मॉनिटर करना पड़ता है। अब हमें मेन सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कॉज क्या है। कॉज जब तक हमें पता नहीं लगेगी तो वी नॉट रीच दी पॉइंट। हमारे लिए फोकस ये होना चाहिए कि हम जो इम्प्रॉपर यूज ऑफ दी एंटी माइक्रोबियल्स हैं उसको विद दी कंफर्मेशन ऑफ दी एज एसोसिएट एंटीबायोटिक्स, ये मैं बता चुका हूँ कि जी वर्ल्ड वाइड जो है हमें रोज बरोज जो है रेजिस्टेंस जो है वो देख रहे हैं, और इस रेजिस्टेंस की वजह से हमें मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी हमें फेसिंग हो रही है। मॉर्बिडिटी इज अ स्टेट व्हेन अ पेशेंट इज सफरिंग इज अ डेंजरस वे इन एंड साइड पॉइंट, एंड द मोर्टेलिटी यानी वो अपनी एंड पे पहुंच जाता है। अब बात ये है कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप, पहले तो सबसे पहले काज पता लगे कि हम काज ये है कि हम इनएप्रोप्रिएट यूज कर रहे हैं, प्रॉपर डोज में नहीं दे रहे, प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर रहे। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कैसे हुई? नेचुरल फिनोमिना है कि आप एक दफा किसी को बात कहते हैं, दूसरी दफा कहते हैं, तीसरी दफा कहते हैं, सर जी मैंने एक दफा दाता है, मैं मान लिया तुझे आपका, ठीक है। तो देखिए उसमें भी रेजिस्टेंस है। फिर रेजिस्टेंस उस वक्त होती है कि हम मान रहे हैं, कोई हमारी नहीं मान रहा, तो वो कहेंगे सर आपने मेरी बात को मानते नहीं, तो मैं आपकी क्या बात मानूं। तो बैक्टीरिया भी इसी जिद पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। और फिर ये कि मिस यूज इज अ वेरी फ्रीक्वेंट कि इसमें, और फिर ये कि हमें जो एंटीबायोटिक्स हैं लॉन्गर यूज के लिए, जैसे वो मैंने 80 डेज से वो बच्चा एंटीबायोटिक पे, जब हम लॉन्गर यूज पे आएंगे तो एक दफा एक बैक्टीरिया से इंफेक्शन हुई, दूसरे को हुई, तो अगर आप लोगों में माइक्रोबायोलॉजी बेसिक्स पढ़ी होगी, जो कंजुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, तो उसके थ्रू से जो रेजिस्टेंस है, जैसे बैक्टीरिया भी, जैसे हम एक दूसरे के कान में विस्परिंग कर देते हैं कि जो गल तो सुनी है ना मननी नहीं हैगी, ये आखिर तक पहुंच जाती है, ठीक है। दिस इज द कंजुगेशन, ठीक है। और फिर क्या है कि हमने जो है पैथोजेंस हमने प्रॉपरली सेंसिटिविटी नहीं चेक की, ठीक है।
तो उस हवाले से हम प्रॉपर्ली उन्हें वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहाँ कहाँ काम करते हैं? एक, एंटीबायोटिक करती ही सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। अगर हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर नहीं देंगे तो अदर देन दे देंगे, वो वहां पे काम नहीं करेगा। सेल मेम्ब्रेन को डिपोलराइजर करने के लिए अलग ग्रुप है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए अलग ग्रुप है, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करने का जो है वो अलग ग्रुप है, और सम मेटाबॉलिक जो पाथवेज हैं उनको हम ब्लॉक वो कर देते हैं, खासतौर पे जैसे पैरासाइट्स में है, ठीक है, और तो बैक्टीरिया में भी है। तो ये मेन 5 जो है वो टारगेट रीजंस हैं कि जहां पे एंटी माइक्रोबियल मैकेनिज्म जो है वो एक्ट करती है। ये एक इसका मिरर इमेज जो वन हेल्थ के हवाले से कल मैंने स्पेशली इसमें डाला कि हमें जो है वो मोस्टली जो है अब एनिमल से आया, फिर हमें अगर स्किन कंटेमिनेट थी, एनिमल बीमार था, उसने जनाब उसका जो उसने स्किन को कंटेमिनेट किया, उसके बाद जो है वहां से होती हुई वो डाइट पहुंची, वहां पे जो कहने के एनवायरनमेंट में थे, सॉइल में थे, ठीक है, वो फूड के थ्रू से जो है वो पहुंचे जनाब ह्यूमंस तक। ह्यूमंस में पहुंचने के बाद जो है वो फिर हम इनएप्रोप्रिएट ड्रग्स अगर हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ से भी आया, अगर एनिमल अफेक्टेड था तो उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके थ्रू से आया, या फिर वो जो कंटेमिनेटेड वो खुद बीमार था जिसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं, यानी जूनोटिक डिजीजेस आर बेसिकली एक्सीडेंटली इट अफेक्ट द ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन को उस वक्त हुई कि जब वो एनिमल को थी, ठीक है। फिर ह्यूमंस के बाद ये है कि इसके अलावा जो है वो हमने इनएप्रोप्रिएट यूज की, एक इंसान को हुआ, फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर हेल्थ केयर वर्कर्स के हवाले से जो है जिसको हम कहते हैं कि कैरियर के तौर पर, कुछ लोग कैरियर होते हैं, वो यानी उन्हें वो साइन सिम्टम्स नहीं होते, वो उस तरह से भी जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हम कहते हैं ना कि आपका क्या इन्फ्लुएंस है मेरे पे, आप इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड दे रहे हैं, तो ड्रग्स भी जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं, इनकी रेजीम्स जो है इनमें रेजिस्टेंस डेवलप होती है कि पब्लिकली जो है जब आप इनफ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं, पेशेंट्स के फैक्टर्स हैं, और हमारे फार्मेसी और फिजिशियंस रिलेटेड फैक्टर हैं। आई जस्ट क्विक रिव्यू गिव द रिव्यू, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ह्यूज पॉपुलेशन है, रैपिड स्प्रेड है, और इसके अलावा जो है वो कम्युनिटी में रेजिस्टेंस जो है वो एक्वायर्ड हो रही है, इन्फेक्शन प्रॉपर कंट्रोल प्रोग्राम्स नहीं है, और इसके अलावा वाइड जो मेन इसका जो फोकस है the widespread use of the antibiotic in animal agriculture and the medicated clinic program। अब हम देखें, हम में से बताएं कि सर हमारे पाकिस्तान में वेरी फ्यू एरियाज हैं कल्टिवेटेड भी जो फील्ड्स हैं कि जहाँ पे हम जिनको कहते हैं कि जी ऑर्गेनिक, और यानी हम यहाँ पे जितनी भी फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, उन तमाम पे जो है वो फर्टिलाइजर्स का हमला है, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देंगे, और उनको जो डिजीज लगी होगी वो आ जाएगी। और फिर एनिमल खासतौर पे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसके हवाले से आ रहे हैं, और फिर ये कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी हैं ये विदाउट एनी कंट्रोल, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं। हमारा पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे अपना फार्माकोपिया नहीं है इसका। इसी तरह कुछ और अब एक इन्होंने ड्रैप बनाई है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उस हवाले से भी आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो आंखें बंद करनी पड़ रही है। ड्रग रिलेटेड में क्वालिटी ऑफ द ड्रग इज द फेक ड्रग्स बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो आज से 5 साल 7 साल पहले जो है वो लोधरा में रोसिफेनिक इंजेक्शन है, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, वो पकड़ा गया, कोई कोटा पकड़ा जाता है, कहीं लिया में पकड़ा जाता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द ड्रग इज नॉट मेंटेन। उसके बाद जो है जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ऐसे फेक किस्म की उन्होंने जनाब मीटू प्रोडक्ट्स बना दी है। अवेलेबिलिटी जो है उनकी जो काउंटर्स जो है वो इजीली अवेलेबल है, जैसे सिगरेट इजीली अवेलेबल है, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है आप अभी जाएं, आपको जो ड्रग है आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये है कि इरेशनल डोज है, डोज आप कम लेंगे तब भी प्रॉब्लम, डोज ज्यादा लेंगे तब भी प्रॉब्लम, ठीक है। पानी थोड़ा पिएंगे
उसका आपका अफेक्ट आएगा, पानी ज्यादा पी लेंगे तब भी उसका अफेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी ब्लड कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी तो उसमें हमें पेशेंट का फैक्टर क्या है कि उसमें डोज रिजीम्स देनी पड़ती हैं, बच्चों को सस्पेंशन देने पड़ते हैं, बड़ों को ओरल फॉर्म में है, या अगर कोई मॉर्बिडिटी है तो उसको आईवी लाइन के थ्रू से देंगे। तो पुअर एडहेरेंस ऑफ द डोजेज जो रिजीम्स हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने डिसाइड करना है कि कौन से पेशेंट को, कितने फीसद ऐसे लोग हैं आप में से जिसने विजिट किया इस वक्त मुझे इस फोरम पे बताएं कि आपने जिसको विजिट किया उसने आपका वेट, आपका बीएमआई पता करके आपका जो फार्मासिस्ट था उसने आपको डोज दी। हाउ मेनी पीपल you just visit the any person who just prescribe the drug, it is just right now 500 मिलीग्राम सुबह शाम, नो, हर शख्स के लिए एक डोज नहीं। सरफेस एरिया, बीएमआई, बेसल आपका मेटाबॉलिक जिसमें उसकी हाइट है, उसका वेट है, सरफेस एरिया है, उससे फिर डोज कैलकुलेट होगी। फिर अगर वो रीनल प्रॉब्लम है तो उस रीनल प्रॉब्लम में उसकी डोज एडजस्टेड होगी, अगर उसको लीवर प्रॉब्लम है तो उसकी डोज एडजस्टेड होगी। ऐसी दवाइयां जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं दी जाएंगी, जो लीवर से गुजरेंगी, उसको दूसरी एडवाइस की जाएगी। तो कितने मुझे आप में से मुझे अपडेट करें ना कि आप में से कभी आपके बिल्डअप में से या आप में से कभी अल्लाह ना करे किसी को जो है इस किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़े, तो आप खुद बताएं कि कभी दवाई के लिए उसने बताया कि नहीं आप अपना हाइट वेट करके आप फार्मासिस्ट के पास चले जाएं। जेनेरिक ड्रग्स लिखी जाती हैं, जेनेरिक में हमें पता है कि सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इफ आई एम दी पर्सन दैट डीलिंग विद द इन्फेक्शन, तो उसमें मैं अगर देखूं कि मैं उसे लिखूंगा कि थर्ड जनरेशन आप हैं, बट आफ्टर दी फॉर्मेलिटीज, कोडल फॉर्मेलिटीज, तो उसमें जो है पुअर एडहेरेंस आ जाएगी। फिर हमारे पास जो है वो हमारे जो लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, और सेल्फ मेडिकेशन तो इतनी हद तक है कि बस ना पूछें। दिस इज द रीजन फॉर डेवलपिंग द एंटीमाइक्रोबियल। और फिर मिसकंसेप्शन इज अ वेरी, डॉक्टर साहब ये दवाई ना देना कि मैंने दसिया सी कि ये खाण नाल ना दिमाग फिर जाता है। डॉक्टर साहब ये एंटीबायोटिक भारी तो नहीं है, ये खाने के बाद मैं चल सकूंगा या नहीं चल सकूंगी। दिस इज द मिसकंसेप्शन। अच्छा, ऐसे भी हैं दवाइयां लेके आ गए, थैले में रख दी, पता लगा खाई नहीं है, दूसरे विजिट पे गए, अच्छा 1-2 दिन में दवा ठीक नहीं हुए, अगले दिन दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, उनसे पूछा कि जी, उसने देखा नहीं सही नहीं है, ये रीजन है, ठीक है। और उसके बाद नई दवाइयां, क्योंकि कमीशन पे सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। अब वो पता लगा, अगर पहले के बाद भी चले जाते हैं तो जी मोहतरम या मोहतरमा आपने ये दवाई इस्तेमाल की? नहीं डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं खाती कि मैंने किसी ने दसिया सी, मेरे खाण नाल ना अखां जेहड़ियां ने ना ओदी नमी जरा ज्यादा आ जाती है, वो अखां बंद होने लग जाती है, ठीक है। क्या होता क्या है, पैसे भी लगे, सब कुछ लगा, इस्तेमाल नहीं हुआ, होता क्या है दिन ब दिन जो है अगर हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मिसकंसेप्शन इस वक्त जो है मैं इसको फर्स्ट कहने के फर्स्ट स्टेप है। जैसे पहला अगर हम स्टेप नहीं चढ़ते तो दूसरे स्टेप चढ़ने में मुश्किल होगी, दूसरा जो है वो सेल्फ मेडिकेशन है, डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे कैसे चढ़ सकेंगे? चढ़ सकते हैं मगर हर शख्स ऐसे ही है ना सर। तो ये जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, इट इज दी कहने के प्रायर वन हैविंग डेवलपिंग दी। अच्छा, अब आ जाता है जनाब जो चीज आती है इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ द अवेलेबल ड्रग्स। द पर्सन हु डील विद द राइटिंग द कहने के मटेरियल फॉर द एप्रोप्रिएट डिजीज साइन सिम्पटम विद कोरिलेटेड, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट 2 एंटीबायोटिक, 1 ओमेप्राजोल, 1 रूल ये है सर, अगर आपने सेकंड ड्रग भी देनी है, ठीक है। I completed my house job in 1997 with a very renowned hair physician, alhamdulillah मेरे उस्ताद मोहतरम जो है प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान गनी, आप में से अगर जानते हैं उनको, ठीक है, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मेडिसिन मैंने उनके पास काम किया। तो दूसरी ड्रग हमें पता है कि नहीं लिखते थे। आज भी अगर आयरन डेफिशिएंसी आती है तो मैं फेरस सल्फेट लिखता हूँ।
पैरासल्फेट एक छोटी सी गोली है, 1 रुपए की 10 गोली है सर। वो भी वही काम करती है कि जो 70 रुपए की गोली करती है, ठीक है। तो इनएप्रोप्रिएट जो है आपकी ड्रग्स जो है वो कास्ट भी उसमें वो करती है, मरीज खाता ही नहीं। फिर ये कि एम्पेरिक पुअर जो है ना वो पॉली एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, ओवर यूज है, इनएडिक्वेट डोजिंग है, करंट नॉलेज और ट्रेनिंग जो है ना इसमें है। इसमें मैंने एक जो लफ्ज ये डाला, स्पेशली डाला, प्रिस्क्राइबर रिलेटेड फैक्टर। प्रिस्क्राइबर के लिए शाम को जो है वो एक लाइन लगी हुई होती है, डॉक्टर साहब ये मेरी दवाई है, ये मेरी दवाई है। मैंने तो सर पानी में टपका दिया आपको, ठीक है। तो वो बहुत सारी जो ये रिलेटेड है ना, ये इससे जो है ना ये फैक्टर्स इस पे आ रहे हैं। अगर हम देखें कि ये रेजिस्टेंस थी, ये जो एरियाज हैं ये देखें, ये रेड एरिया जो है ये शो कर रहा है रेजिस्टेंस का, ये प्रीवियस था, ये इस वक्त हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ना जी इसमें आ रहा है। ये रेडिश एरिया शो दी रेजिस्टेंस मार्क। फिर ये जानना जरूरी है, ऐसी दवाइयां हैं जो ग्रुप्स हैं जिनको बैक्टीरियासाइडल्स कहते हैं, ऐसी हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं, ऐसी दवाइयां हैं जो ऑर्गेनिज्म को उनका मेटाबॉलिक पाथवे रोकते हैं, वो खुद मर जाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। बैक्टीरियासाइडल देने में जब वो पेनिट्रेट करती हैं तो वो फिर उसके कुछ थोड़े से एडवर्स इफेक्ट भी बॉडी में आते हैं। ग्रुप्स हैं कि आपको हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक किस वक्त देनी है। मैक्रोलाइड ग्रुप बैक्टीरियोस्टैटिक्स, अगर जो ग्रुप्स हैं वो बैक्टीरियासाइडल इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है वो इंट्रिंसिक और एक्वायर्ड दोनों के हवाले से जस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस टारगेट साइट अचीव नहीं होंगे, जेनेटिकली जो है वो क्रोमोसोमल में म्यूटेशंस हो गई हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है वो प्लाज्मिड में उसी बैक्टीरियम में या फिर वो क्रॉस दूसरे बैक्टीरिया को जो है वो अफेक्ट करेगा। उसके अलावा एक्वायर्ड में बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिसमें ESBL एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेसेस हैं, कार्बिनेज रिलेटेड हैं, डिफरेंट जो है वो इनमें बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स हैं। दीज आर द basically the natural one and the acquired among the acquired, it may be through the genetic, it may be the behavior. Limiting uptake of the drug, मैं पहले बता चुका हूँ, ड्रग टारगेट्स प्रॉपर्ली नहीं होते, इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग्स है, और फिर ड्रग का इफ्लक्स नहीं होता, प्रॉपर्ली ड्रग पहुंच नहीं पाती, ठीक है। बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर जो है पहले पढ़ा था, ठीक है ना, और ये इस तरह फिंगर टिप पे है कि ये प्लाज्मिड पड़ा हुआ है, ठीक है ना, दिस हैव द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। फिर आपकी इम्परमेबिलिटी हो, सेल जो वॉल है वो मॉडिफाइड हो जाए, ठीक है ना, वो आपको पेनिट्रेशन नहीं होगी। उसके बाद जो है डिफरेंट मॉडिफिकेशन अंदर टारगेट्स हैं ये मॉडिफाइड हो जाए, इनफ्लक्स और रिफ्लक्स जो पंप है ये ड्रग को जो है प्रॉपर्ली जो है वो इनसाइड नहीं लेके आएगा और एक्साइड नहीं आएगा। इनएक्टिवेशन जो है थ्रू द डिफरेंट क्या लेंगे एंजाइम्स, ठीक है। फिर ये कि राइबोसोम उसके खिलाफ हो जाए। तो ये तमाम जितने मैटर्स हैं ये तमाम हमारे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए जो है वो एनहांस करेंगे। फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव बोकाई है, ठीक है। अगर हम इस वक्त मेथिसिलिन MRSA ये हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। फिर एक ड्रग हमारी जो है वो हम सेप्टिसीमिया में या लास्ट में देते हैं वैंकोमाइसिन। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वैंकोमाइसिन जो है वो सेफ है, इसकी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं है क्योंकि वो इस्तेमाल में नहीं है। फिर उसका हाल ये है कि महंगी बहुत है, अगर थोड़ी सस्ती होती तो शायद हो सकता है कि वो भी इस्तेमाल हो जाए। थोड़ी सी चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ। इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग ये लेक्चर है सर, ये आपके पास ये इनफ्लक्स पंप है, ये अगर ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो ड्रग्स आर नॉट प्रॉपर्ली इन एंड देन आउट, ठीक है। और हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया भी है तो उसको देना है। तो वायरस में भी ग्रुप पता लग जाता है, तो उसमें भी प्रॉपर्ली उसकी एंटीबायोटिक जो हम देंगे। पैरासाइट भी, हर पैरासाइट डिफरेंट है, उसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसी तरह जो फंजाई है
कैंडिडा उसके लिए ड्रग ज़्यादा है, और अदर जो कैंडिडा अदर देन द फंगस कैंडिडा है तो उसके लिए ज़्यादा है। तो ये एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो डे बाय डे जो है वो बढ़ करती जा रही है, ठीक है, और हमें इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा थ्रू अवेयरनेस, थ्रू हेल्थ एजुकेशन, थ्रू प्रिस्क्राइबर पॉलिसीज। जब तक हम ये प्रिस्क्राइबर पॉलिसी नहीं करेंगे तो हमें ग्लोबली जो है, देखिए इसमें पहला ही जो है वो पॉइंट है कि हमें अवेयरनेस को करना पड़ेगा, समझाना, बस अवेयरनेस देनी पड़ेगी, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी कि नॉलेज को, और एविडेंस बेस बनाना पड़ेगा कि क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, और इन्फेक्शंस को भी कम करना पड़ेगा, उसकी भी प्रिवेंशन। कहते हैं ना कि बचाव बेहतर है इलाज से, तो प्रिवेंशन, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स करने पड़ेंगे। उसके बाद ये है कि हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा एंटी माइक्रोबियल यूज को। अब अगर यही है कि एंटी माइक्रोब यानी एंटीबायोटिक उस वक्त करेंगे जब कंफर्म होगा। हमारे यहाँ अगर टेम्परेचर आया 2 से 4 घंटे में बीमार हुए, बुखार हुआ, तो हम समझते हैं कि जी इसको जो है ना जी फौरन एंटीबायोटिक दे दें। रूल इज दैट सबसे पहले आप उसकी हाइड्रेशन बेहतर करें, आप उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी एंटीपायरेटिक जो पैरासीटामोल है वो दे दें, ठीक है। टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर नो डाउट इज ए पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, वो शो करता है कि बैक्टीरिया हो रहा है, सेप्टिसीमिया हो रहा है। हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए भी, सस्टेनेबल करने के लिए जो है फिर इसमें हम इन्वेस्ट ही किए जा रहे हैं, डेली बाई डेली नई फार्मेसी, नई फार्मा जो है ना वो ड्रग्स को जो है वो इसको जो है वो अटैच किए जा रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, एजुकेशन बेहतर होनी चाहिए, ट्रेनिंग को हम एनहांस करें, और उसके अलावा हमें सर्विलेंस बेहतर होनी चाहिए, स्टेप वार्डशिप जो है हमें साथ में करें, फिर कंट्रोल प्रोग्राम होने चाहिए, और सबसे अहम बात कि हमारा नेशनल रिसर्च एजेंडा होना चाहिए, ठीक है, और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ जो है वो हमारी स्ट्रेंथनिंग हो और क्लियर गवर्नेंस हो उस तमाम अरेंजमेंट्स में, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो हम ट्रीटमेंट फेलियर से बच सकते हैं, रिकरिंग इन्फेक्शन से बच सकते हैं, लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे से बच सकते हैं, लॉन्गर रिकवरी टाइम से बच सकते हैं, हाई रिस्क मोर्टेलिटी से बच सकते हैं, और हमारी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। और इनएप्रोप्रिएट यूज देखा जाए तो कैसे हम उससे बच सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से, कि हमें प्रॉपर्ली, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जी हर एक ड्रग का जो है अफेक्ट होता है, उसकी टॉक्सिसिटी है, डिफरेंट ड्रग्स की जो है ना डिफरेंट जो है एप्लीकेबिलिटी है। दिस इज द समरी, एंड एट द समरी द मैसेज इज गिवन, always follow the rule, the applicable rule. If drug is need, that should be need. अगर दवाई की जरूरत नहीं है, मुराद प्रॉपरली एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, अगर है तो प्रॉपर डोज करें। अगर मैं इस्तेमाल कर लूंगा, होगा क्या कि वो जो ऑर्गेनिज्म मेरे जिस्म से निकलेगा तो वो रेजिस्टेंट होकर जब निकलेगा तो वो दूसरे को रेजिस्ट करेगा। वो इसलिए है कि नहीं अनमुमकिन में कि बुराई को आप खुद रोकें, आप नहीं रोक सकेंगे तो आगे फैलती जाएगी। इसमें हमें स्टेप वाइज हर एक शख्स का रोल है कि जिसमें एवरीबॉडी प्ले रोल, ठीक है। अगर हम हॉस्पिटल में देखें तो उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होगी, फार्मासिस्ट होगा, डिजीज स्पेशलिस्ट होगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा, ठीक है, फार्मेसी के साथ होगा, और एडमिन का बंदा होगा। ये एक जो स्टेप है, ये अगर हम फैसिलिटी हेल्थ केयर में प्रोवाइड नहीं करेंगे, फिजिशियन जो है वो इटसेल्फ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होगी जो इसको सारा हॉस्पिटलाइज पेशेंट को करेगी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट जो है प्रिस्क्राइब करेगा, एंड इट शुड बी कहने के राइट इन ए गुड वे, ठीक है। और सबसे अहम बात जो है वो की मैसेज क्या है, आज से यहाँ से खत्म होने के बाद, इस लेक्चर के बाद मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, कुछ अल्फाजों को आप पहले पढ़ भी चुके होंगे, जस्ट हाईलाइटेड कि हमने जो है वो बचना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, ठीक है। और एप्रोप्रिएट यूजेज अब कहने के देखें, अब होता है ना कि हम अपने लिए अच्छी चीज पसंद करते हैं, ठीक है, तो अपने लिए भी अच्छा करें और दूसरों के लिए भी, चाहे वो दोस्त है,
मैं किसी को दुश्मन नहीं कहता। असलम साहब बैठे हुए हैं, मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ कि सर मैं नहीं कहता, कोई दूसरा मुझे कहे तो कह दे, मैंने नहीं किसी को दुश्मन कहता। ठीक है, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। अब इसको देखें, ये एक तराशा गया है इंसान के हाथ में, अल्लाह ने बड़ी चीजें दी हैं, ये तराश के उसको ऐसी हालत में है कि उसको बना दिया गया है एक थिंकिंग, यानी अगर हम बिल्कुल खाली और जहन हो जाएंगे, इसका ये मतलब ये है कि अगर हम प्रॉपरली उसकी केयर नहीं करेंगे तो ये हरे भरे रहेंगे। तो इसलिए हरा भरा जो रहना जो है वो हमारे लिए दुरुस्त है, एंड विद ए गुड मील। एंड इसी हवाले से मैंने स्पेशली ढूंढी, मैंने कहा जी एनिमल वहाँ से वेटनरी वहाँ जा रहे हैं तो कहने के गुड सोर्स ऑफ द इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो है वो प्रोटीन इज ए गुड सोर्स। और आखिर में वो कहते हैं कि एन एप्पल अ डे, ठीक है ना, और यानी इसमें बैलेंस डाइट के हवाले से देखिए कितनी खूबसूरती से इसको जो है वो डिजाइनिंग इसकी बनाई हुई है। तो हैव अ नाइस डे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आई जस्ट थोड़ी सी कोशिश की क्योंकि 2-3 दिन पहले और कल भी मैंने इसको फैक्ट फाइनल किया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं जिसको मैं चाहता था, सामने तो बहुत सारी होता है, बहुत कुछ होता है। तो वैसे ये स्लाइडें तकरीबन कोई 200 के करीब स्लाइडें थी सर। तो मैंने इसको 80s पे, पहले ये 40 थी, फिर मैंने कहा कुछ चीजों को, क्योंकि टाइम शार्ट था, ये आपके पास मौजूद है, आप इसको कर लें। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टुडे द टॉपिक द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस? जी प्लीज सर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या रोल हो सकता है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है? एनवायरमेंटल मैंने बताया ना आपको कि अगर हम लिंक्ड है ना हमारा, हम एनवायरमेंट में ये उसी तरह है कि सर्दी अगर होगी, ठीक है, तो उसका प्रॉपरली उसका करेंगे। एनवायरमेंट में हमें जो आपके एनिमल्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो इनएप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ दी यानी कि जो प्लांट्स पे है, उसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, तो उससे हम बच सकेंगे। सर, अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें, मतलब ह्यूमन हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी जो हमारे दो फैक्टर्स हैं वो सबको कंबाइंड है। वो ये कहते हैं कि देखें, जूता भी पाँव के नस्बत से लें, ये नहीं लेना कि अगर 10 साल की उम्र है तो जी अपना उसका पाँव 6 नंबर है तो 8 नंबर ले लेंगे, चलो जी ले लेंगे, उसमें कपास रख के पहनते रहेंगे, कोई नहीं 2-4 साल 5-6 साल चल जाएगा, उसको चलाते रहेंगे। तो ये दिस इज द कंट्रोल। एप्रोप्रिएट का मतलब एप्रोप्रिएट, हम 1 स्टेप 2 स्टेप नहीं जाएंगे। और फिर ये टीम वर्क है, जब तक आपकी तमाम चीजें एडहेयर नहीं होंगी, एनवायरमेंटल भी जरूरी है, पेशेंट की जो कह लें उसकी न्यूट्रिशन भी जरूरी है, उसके बाद उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टुडे टॉपिक इज द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस से बचने के लिए हम प्रॉपर्ली उसको डायग्नोज करेंगे, प्रॉपर्ली उसकी ड्रग को देखेंगे। फिर ग्रुप ऑफ द ड्रग्स हैं, ग्रुप्स हैं। अगर आपको छोटी ये उसी तरीके पे है कि एक चीज जो है वो उसे तीर से मार दें, तो उसको जो है वो तोप से तो नहीं मारेंगे ना, तो हम वो तोप से मारेंगे। जब तोप से मारेंगे तो जब वो तोप का गोला जाएगा तो क्या होगा, तो वो डैमेज तो ज्यादा करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि एप्रोप्रिएट यूज, जो जहां है, जैसे है, जिस तरीके पे है, उसके सर्कमस्टांसेस अलग है। ठीक है, इस वक्त गिलगित के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, बावलपुर के अलग है। ठीक है, इसी तरह वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे लिए वो फैक्टर के साथ साथ बाकियों को भी, ये नहीं है कि सिर्फ उसको कंट्रोल कर लेंगे तो बाकियों को नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं जी प्लीज सर, जैसे कि एंटीबायोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल बहुत हद तक बढ़ चुकी है, तो हम क्यों ना कि एंटीबायोटिक के अलावा दूसरे सोर्स है जैसे कि वैक्सीन प्रोडक्शन है या कोई और सोर्स है, उसकी तरफ नहीं जाता। देखें, वैक्सीन आर बेसिकली इट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल द डिजीजेस। इट कंट्रोल, ये आप सर्विलेंस से कर सकते हैं कि नहीं मासली आप बड़े एरिया को बचा सकते हैं। वैक्सीन्स आर उस वक्त दी जाती हैं कि जब आपने एक लार्ज पॉपुलेशन को बचाना हो जो अभी हुई नहीं है। वैक्सीन उन लोगों को दी जाती है कि जो अभी अफेक्ट नहीं हुए हो सकते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये उनको दी जाती हैं कि जिनको बीमारी होती है। तो वैक्सीन उनको देते हैं कि जिनको अभी नहीं हुआ, हम बचाने के, हम कहते हैं शीट एक्स्ट्रा रख लो। जैसे अक्सर गर्मियों में जो है वो सेल लगती है, तो खास तौर पे हमारी जेंडर कोई मैं कहूँगा
अक्सर कपड़े अच्छे मिल रहे होते हैं, सस्ते मिल रहे होते हैं, तो हम मौसम से पहले ले लेते हैं कि लो जी अगले साल इस्तेमाल करें। अच्छी चीज को अच्छा सूट मिल गया, अच्छी चीज मिल गई, ठीक है ना। अब हर चीज की लाइफ है इस दुनिया में। जिस चीज बायोमास पे अभी हम गए, मेरे ख्याल में सर 3 वीक्स पहले गए थे अपना वुमेन यूनिवर्सिटी में। अब बायोमास की यूटिलाइजेशन पे हम नहीं काम कर रहे। अब हर चीज की लाइफ है, कौन बायोमास, हर चीज में फना हो जाना है, हर चीज। तो इसलिए उस उतना रखेंगे जितना होना चाहिए। Any question regarding vaccination is not is the forward step to spread. अब जैसे कोविड का है, कोविड में, कोरोना में मैं खुद दूसरी जिंदगी लेके आया खड़ा हूँ। BSL लैब 3 का मैं इंचार्ज था और ये मई 2020 में ये शुरू हुई भावलपुर में। और मुझे सर मार्च फरवरी मेरे ख्याल में 26 फरवरी 2021 को आई वाज अफेक्टेड, ठीक है। और 19 नहीं था वो, मेरे ख्याल में दूसरा वेरिएंट था, ठीक है। और वो भी मैं लाहौर गया एग्जामिनेशन और वहाँ से वापस आया था जनाब, और कोविड-19 नेगेटिव था। और जो है वो उसमें जस्ट कह लेंगे 1% जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन जस्ट 1% ड्रॉप हुई। फौरन सीटी स्कैन कराया तो पता लगा लोअर बेसिस हो जनाब 5.5। तो इसीलिए वैक्सीनेशन जो है मैंने नहीं करा, मेरे साथ बहुत सारे मेरे कुलीग्स हैं उन्होंने वैक्सीनेशन कराया, उनको भी हो गया। वैक्सीनेशन इज नॉट द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। हाँ, ग्लोबली अब 3rd डोज भी आ चुकी है। आई थिंक यू ऑल आर वैक्सीनेटेड। सर मैंने वो ये देखे सर, एनीबॉडी आस्क मी सर व्हाई यू जस्ट using this aryanogram, just using it. I'm just saying it is vaccinated. It is not vaccinated. It is vaccinated against the fear. खौफ से भी जो है वैक्सीनेट हुआ हो, क्योंकि वो मौत के मुंह से वापस आए हुए हैं। तो इसीलिए जो है ना वैक्सीनेटेड मीन डिजीज से, बिहेवियर से, ठीक है ना। मगर हमारे स्टूडेंट थोड़े वैक्सीनेट हुए हैं क्लास में ना आने से है, या ऑनलाइन एग्जाम लेने पे मुज़र हैं। जी पूछे सर, फिर क्लोज करें। जी वाइंड अप। जी जस्ट लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विद द अथॉरिटी, ठीक है। डेफिनेटली देन बी अगेन। जी प्लीज सर मेरे क्वेश्चन ये है कि हमारा जो मेन अभी भी फोकस है वो एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो उसके अंदर अभी जो आपने एक रेफरेंस दिया था WHO का, उसके अंदर 7 लाख डेथ्स होती हैं लोग। तो उसमें भी अगर हम देखें तो सर वो HIV की वजह से 700,000 तो उसमें भी ज़्यादा जो मेन फोकस है वो वायरसेस के ऊपर है या दूसरे पैरासाइट्स के ऊपर है। तो जबकि बैक्टीरिया के ऊपर जैसे हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली कॉन्जुगेशन से रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो इस तरह के कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर मैकेनिज्म है जो उनके अंदर डेवलपमेंट होती है, जैसे इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, तो अदर माइक्रोब्स के अंदर कैसे है? My dear, the resistance can be developed through the bacterium. It is a series of the mechanism. It is the conjugation, transaction, one bacterium to another bacterium, and it is spread one bacterium, group of bacterium to other species of the group of the bacterium. There are 7 billion, maybe 700 हैं. It is just the focus. Mostly nowadays, the resistance observed on against the bacteria and viruses. Parasites में नहीं है, बहुत कम है। फंगस में हो चुका है, और फंगस में जो है इनएप्रोप्रिएट यूजिंग जो है वो फंगल एलिमेंट ही नहीं होता। मेरा सर एक पेपर अभी मैंने हो चुका है जिसमें एक सिंपल टेक्निक है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आधे घंटे में आपको नेल है, हेयर है, जो भी है, आप उसे इमर्स करें, उसको इंक्यूबेट करें, माइक्रोस्कोप करें। अगर आपको फंगल एलिमेंट नजर आ जाता है, दैट मीन कि दैट पर्सन नीड दी एंटी फंगल एंटी माइकोटिक ड्रग्स। अगर नहीं है, आप उसके अदर यूजेस करें, उसकी एमोलियंट्स दे दें, कुछ और कर लें। ऑनिकोमाइकोसिस के 5-6 पेपर मेरे पब्लिश हो चुके हैं जिसमें उसकी हिस्टोपैथोलॉजी का टेक्निक है, कंबाइंड है। तो एप्रोप्रिएट आपने बिल्कुल क्या है, वायरसेस के अगेंस्ट भी आ रही है, पैरासाइट्स में भी अब डेवलप होना ज्यादा बैक्टीरियम में है। इस वक्त हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज ESBL, आपकी तीनों जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की उड़ गई है। कार्बीपेनम ग्रुप में, कार्बीपेनम जो ग्रुप्स हैं जिसमें ये इमीपेनम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो है आपकी अदर जो न्यू ड्रग्स बहुत सारी आ चुकी हैं। अब इस वक्त जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें न्यू ड्रग्स हम खुद बना सकते हैं, उसके एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट बना सकते हैं, मगर हमें अवेलेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया आज से 7 साल 10 साल पहले, जो है इंटरफ्यूरोन किसी ने बनाया, उसको आगे लॉन्च ही नहीं होने दिया।
तो इसीलिए एक तो हम सबसे पहले इस अवेयरनेस का भी यही है कि हमें एप्रोप्रिएट यूजेज, वो कहते हैं प्रॉब्लम रहता है जिसमें एक लफ्ज हम एपिडेमिक या एंडेमिक है, तो हमें एंडेमिक रेजिस्टेंस है ना, एपिडेमिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब इनएप्रोप्रिएट ले लेंगे, मैं जब दवाई मेडिकल स्टोर पे जाके लूंगा कि सर मुझे 4 दिन से मेरे इसको बुखार है, यूं है, तो वो उठा के वो कहेगा जी इसको दूसरी महंगी वाली दवाई उठा के दे दो एंटीबायोटिक, क्या होगा, वो एक तो वो ठीक नहीं होगा, जब वो यूज कर लेगा तो बॉडी में जो बैक्टीरिया मौजूद होगा उसको उससे भी रेजिस्ट कर देगा, जो लोअर जिसको देनी होगी उससे भी रेजिस्ट कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड राहिल आगे से पिक्चर बनाएंगे, लाइव वगैरह पिक्चर बनाता रहेगा। Thank you so much, sir, for your invaluable contribution towards our event. We all feel blessed in your presence. Antimicrobial resistance is one of the biggest public health challenges of our time. Fighting this threat is a public health priority that requires collaborative global approach across sectors. So, to light the lamp on the recent status of antimicrobial resistance, I would like to call Dr. Syed Jasra Ali Shah from Department of Zoology, sir, please come. एक देख रहा है कब से ऐसे लोग है ना बैठ कर दिया करा के Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Jasra Ali Shah, Department of Zoology. टाइम काफी हो गया और माशाल्लाह बच्चे काफी थके हुए लग रहे हैं, मैंने सबसे कहा था कि आप इसको स्किपिंग कर दें, यहीं पे हम बाद में किसी सेशन में हो जाते हैं। करल उनका हुक्म है और खासतौर पे गेस्ट स्पीकर के बाद बोलना भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। Okay, so I will discuss antibiotic resistance relevant to veterinary sciences. क्योंकि हमारे veterinary sciences के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमन पर्सपेक्टिव के लिहाज से डॉक्टर साहब ने बहुत सी मालूमात आपको बताई। I would like to discuss something related to veterinary. I made this presentation particularly relevant to the students. It is also just like a lecture for the students to know about the antibiotic resistance and particularly the status of antibiotic resistance in animals. Antibiotics, by definition, as stated by the Nobel laureate Weizmann, these are the chemical substances that are produced by the microbes and that have the capacity in dilute solution to selectively inhibit or even to destroy the microbe. And as stated in the medical dictionary, these are the chemicals produced by the various microbes, particularly fungi, are made synthetically and capable of destroying or inhibiting the growth of the microbe. I will go quickly so you may not get bored. You are familiar with the discovery of the antibiotics and familiar with the name of this guy Alexander Fleming and his story of the battery plate contamination, but the actual story goes 32 years back to Fleming. Antibiotics were actually discovered for the first time by this French guy Ernst Dufresne in Morte. He was a PhD student working in Institute of Paris in France. He used to pass from a military camp where Arabs travel boys. He observed that they put the saddle of the horses in the dark, damp places. And by his curiosity, he went to them, talked to them, why you put these saddles in the dark, in the damp places? And they told him that by the contamination of the mold, when they put these saddles back to the horses, on the back of the horses, their sores are healed. So they use it for healing of the sores on the back of the horses. So he was curious, he made the suspension from the molds, took from the saddles of the horses and injected it into the guinea pig along with the lethal dose of the typhoid bacilli. So this animal survived.
he presented his findings to the research committee, but his work was ignored because of his younger status. And later on, the people came to know that he actually discovered the antibiotics even 32 years before Fleming. So antibiotics are widely used for the treatment of bacterial infection in humans, in domestic animals, in aquaculture, and also used as a growth promoters in animal industry, particularly in the poultry and animal husbandry. And also there are some reports of prophylactic use of antibiotics in aquaculture. Antibiotics, they inhibit the bacteria, they have different mode of mechanism. You know about different type of antibiotics. Some of them they inhibit the cell wall synthesis, some of them they cause alteration of the cell membrane, some of them they interfere with the central dogma, they inhibit the protein synthesis or they interfere the ribosomal activity. Some of them they inhibit the nucleic acid, so they don't allow the microbes to grow. We had an upper hand with the development of many chain reaction. A is converted to B to C to D. So if the antibiotic is affecting conversion of B to C, so the microbe it will directly form A to D. It will bypass the metabolism. So antibiotic is no more effective. Or the antibiotic may affect the enzyme. So as a result, the bacteria will increase the production of enzyme. It will overcome the antibiotic activity. So they again came up in the competition. And the phenomena of multi-drug resistance is a coming crisis. So by this development of multi-drug resistance, so we may come back to the antibiotic era. And it is estimated by 2050 the MDR infection will kill more persons than cancer or any other disease. So even the last resorts of the antibiotics are no more effective because of development of resistance. Bacteria not only develop the resistance, but they even have the ability to transfer this resistance. So this resistance transfer will be vertical or horizontal. Vertical resistance, for example, some microbes they have intrinsic resistance against certain antibiotics. They transmit this mechanism to their offspring. So to their next generation. For example, most of the chromosomal mutations, they are shifted to their offspring. This is vertical transfer from the parents to the offspring. Acquired resistance may be horizontally transferred. So horizontal transfer is from one microbe to another microbe, one species to another species. So this is horizontal transfer. So this slide already have shown that 700,000 deaths are just by MDR. And this data is also an old data about 2012 or 14. Now the cases may be even more than this. So horizontal transfer is an important factor. If one bacteria gets mutated, it got the this level, it transfers this to another, and it is most frequent in nature. Mechanism of transfer may be transformation, transduction, conjugation, which may involve plasmids or transposition. For example, transformation is a mechanism which differs according to the microbe. The gram-negative import double-stranded and positive import the single-stranded. And there are certain competent cells, they occur in the nature, they allow the DNA, so it may absorb the DNA from the environment. But we can do this also in the lab and make the cells chemically competent and electrically competent. For example, this microbe has a resistance gene, it is transferred to the plasmid to the other one, and then it may shift to the other one, and so on. So this resistance is transferred. There may be transduction that is to the third party. So you may be familiar with the life cycle of the bacteria, the lytic cycle and lysogenic in case of lysogenic. So the bacterial the resistance gene is in the virus and it may be transferred to the other. So the one bacterium to another to the virus, to the third party. So this is a transduction. Conjugation, the cells they have direct contact. So they may form a conjugation tube, and through this the resistance
gene in the form of the transposons, in the form of the plasmid, they may be shifted from one microbe to the other. For example, this one has a resistance gene. So resistance gene is copied from the donor and it goes to the recipient and it also got the resistance. So there is a direct contact between the microbe for the transfer of the resistance. So plasmid, so most of the microbes they have plasmid which are circular, self-replicating, and in most of the bacteria they are naturally occurring. This is extra chromosomal DNA, and these plasmid they have different type of the gene. Some of them help in virulence. Some of them they have antibiotic or drug resistance genes or metal resistance genes. Different type of genes are over there. Some microbes they have high copy number, they have some have low copy number, and their transfer rate is also variable. Some may be cryptic or many of them they have the genes and they are involved in the transfer of the resistance from one. So they share the plasmid. The plasmid has the ability to replicate. One microbe can make many copies of the plasmid and then this give to the other. Other factors are the transposons. So DNA sequences capable of jumping from one sequence to another. And there may be class 1 transposon, it is just like a cut paste. The resistance gene is at one place, it is removed from there and inserted into some other place. There are also class 2 transposons, which are just like copy paste. The resistance gene make its own copy and then donate this to the other one. So in this way the resistance is spread among the different. If you see the production animal, the terrestrial meat source, the major meat source are the poultry, the cattle, and in the western world the swine is also a large source of the meat. Around 328 million metric ton food is produced per annum, and 141.7 million is in Asia. Similarly, the global production of the fisheries is more than 200 million. Antibiotics are mostly used in the cattle, in the poultry, to increase the production of the meat, production of the milk, or in case of poultry, for the production of eggs, and approximately 10,000 metric ton antibiotics are used per annum only in Europe, which have a data. But in most of the Asian or African countries, we do not have that. So they have a strict legislation in the use of the antibiotics, even in animals. So without proper prescription, they cannot use it. And they have a strict measures, but still they use more than 10,000 metric tons. So this is data from the 2000 from the Netherlands to Norway. You can see they use a lot of antibiotics in spite of strict legislative measures. And it has been reported that non-therapeutic use is even 8 times more than the therapeutic use. So particularly, I'm talking with respect to animals, veterinary science. The non-therapeutic use is even 8 times higher. The animal is not requiring antibiotic, but it is given to them. The growth promoters, it was banned because of this antibiotic resistance problem in 2006. It was banned in European Union, but still in our countries, in African countries, and really there are certain reports. Even the Europeans, some of the farmers, they are still using it as a growth promoter, as a prophylactic measures to increase the growth of the animal. Also used in new food formulation, plant animal proteins or fish feeds. 90% of the antibiotics which are given, particularly in the aquaculture, that goes to the environment. We cannot manually feed the antibiotic to the fish, to the oyster, to the mussel, to the shellfish. So we have to use it in the water. And 90% of it goes to the environment. This environmental contamination, and in lower dose it can create resistance. It cannot kill. It is
microbiome static. It cannot kill, but it can force the microbe to develop the resistance. In animals, once the bacteria develop the resistance, so they are shifted to the other animal. There are certain factors in the animal husbandry. For example, because of confined environment, high stocking density, there is higher risk of pathogen exchange. The animals, when they are highly crowded, if some of them they have such microbes, they may be easily shifted to the other one. Improper waste management. The antibiotics residues, they are treated along with the waste, and waste management is not proper in the animal. Even no waste removal for the weeds. 335 million metric ton of waste, dry weight per annum is produced only in US, and this is also the whole time. So maybe a soil contamination, for example, dumping of untreated waste, which is much more common in underdeveloped or developing countries like us. Without, and we do not treat it, and untreated waste is dumped into the soil. And we are also giving antibiotics in huge amount. Even each antibiotic has its washout period, so that is not properly managed. We give the antibiotic, for example, at night, and in the morning the animal is slaughtered. So there is a huge antibiotic residue in the meat, in the egg, in the milk, that is shifted to the human and causing problems over there. Also in the soil, and through the soil it may be to the crops, and from the soil that may be mechanically spreaded by the insect. For example, the cow dung is over there, the poultry waste is over there. They have a huge amount of antibiotic residue, and insects, they are feeding over there, and they can shift it. And there are many insect-borne diseases, not only in the animals but also in the humans. So that may be shifted over there. So birds, rodents, etc. For example, during a study conducted by Y et al., antibiotic residue, sulfonamides, oxytetracycline, tetracycline has been reported in the residue. The waste, animal waste, a huge amount of these residues. Wastewater treatment has a mixing of the bacteria from the animal source, from the human source, and from the animal. And if some of them they have resistance genes in the form of the plasmid, in the form of translucents, they may be distributed. The bacteria, they also have social mechanism. So one, they are under the stress. If some of them they have the plasmid with the resistance gene, they distribute among the others. Even if they are in the commensal bacteria, they may be shifted to the pathogenic bacteria. So then they become more dangerous. Enormous quantity of bacteria in the activated sludge or biofilms, they favor the horizontal gene transfer. Final appellants, they may have antibiotic residue or heavy metals from the wastewater treatment plants, and they are the source of contamination for the soil or the crops. Even there may be air contamination of antibiotics because of this confined environment. High volume of fans are used for the ventilation to overcome the heat and humidity in the animal form. Up to less than 10 microns particulate matter emitted through these fans into the environment, and it may go up to the long distances. Millions-fold increase of particulate matter has been observed in the outer environment within 24 hours. So this is gone to the environment. So in the environment is the storehouse of the microbes. So when these antibiotic residue, they are through the air taken up by the microbes, they may develop the disease. 90% samples have the remnants of tetracycline, sulfamethine, and others. Study conducted by antibiotic resistant bacteria has been found from the swine farm 30 meters upwind and 150 meters downwind. So even they may be present in the upwind. The air is blowing in, for example, north to south. Even they were up to 30 meters in the south. So they contaminate the whole air.
Poultry or cattle farm are the reservoir of antibiotic resistance genes. Organism resistance, Campylobacter, E. coli, Salmonella, they have been found not only in the waste but also in the groundwater or the surface water. And the resistance genes, once developed, they may persist for years. In one of the studies, so during my PhD in Norway, we found resistance genes from a fish farm that was murdered around 20 years before. Even after 20 years, there were traces of antibiotic residue and resistant bacteria. In aquaculture, so use of organic waste, because particularly in Pakistan, this is a photograph from one of the fish farm in Pakistan. So you may be familiar that we are using a lot of cow dung or poultry waste in our fish farm. In Pakistan, we are not using antibiotics for the treatment of the disease in fish, but there is a huge resistance in aquatic bacteria isolated from the aquaculture site. And all this is because of use of this animal waste or poultry waste. Because we are using a huge amount of antibiotics in cattle and in poultry, and all those remnants we are dumping into the fish farm. So in Southeast Asia, not only Pakistan, India, Pakistan, Nepal, and even China, Vietnam, we are using integrated fish farming. We use all the waste from the animal farm, from the poultry farms into the fish. On one hand, it is beneficial because this waste boosts the production of phytoplankton, zooplankton, which is a food for the fish. So fish production may be increased. But on the other hand, this antibiotic residue they may cause the problem. Wildlife and antibiotic resistance. So wildlife is free from the use of antibiotics, but different studies show that even the wildlife, they have the resistance genes. And most of the wildlife, apart from the migratory birds, they migrate up to thousands kilometers. So here we can count even the Siberian birds in this wildlife. Even in the sea, animals they travel up to thousands of the kilometers. So they also carry the resistance genes. So they travel just like an aircraft, carrying resistance bacteria, resistance microbes along with resistance genes from one continent to another. Because the microbes, the birds, the wildlife, they do not follow any critical geographical boundaries. They are independent of all these barriers. They can travel along the world and also carry all these resistance genes. And they are even more effective than humans. They do not to apply for the visa. They can go anywhere. And particularly the birds, they have no sewage system. Or migratory bird species, they direct exposed to the farm animals. Particularly migratory waterfowls. 8% E. coli isolated from the Arctic birds, they were resistant against different type of antibiotics. Arctic area, which is far from the human exploitation, but still the animals, the birds living over there, they have the resistance. Spread up. For example, Bla-Andiaman, this was the resistance gene that was developed in India for the first time. It was reported in a Swedish Indian. Later on, it was also reported from Pakistan, from Nepal, from Bangladesh. And the origin of this gene is in Southeast Asia, and later it was reported all around the globe. This is transferred or spreaded through the human travel. Similarly, the spread of West Nile virus and Salmonella in Chile that was supposed to be linked to the bird travel. They carry the resistance gene from one continent to another. So antibiotic resistance, the development of the resistance, and then the spread and exposure are what could be the impact. If I just skip this part, already got it. So in short, the large group of production animal exposed to non-therapeutic doses of antibiotic
that is low pressure, generates more ARKs. The antibiotics at lower dose, they do not kill the microbe, but they force their machinery, the metabolic machinery, to develop the resistance. So when they are under selection pressure, at minute amount of antibiotics can generate the selection pressure, force the microbe to develop resistance. That antibiotic cannot kill, but force it. So this is more dangerous. The low dose or not use of the proper dose is more dangerous in the development of the resistance. When you use the proper dose or high dose, as Dr. was asking, so that may kill the microbe. But when we are not using properly, the doctor prescribed us the antibiotics for 5 days and we just use it for 2 days. So some of them will be killed, but the surviving one will develop the disease. Their bodies. And wildlife also acts as a reservoir and environment. So in short, monitoring of the environment health, so veterinary science, the resistance mechanism, the source, the dissemination and prevention is essential in order for monitoring of environment health, for management of the emerging infection, particularly in the food animals and then zoonotic transfer to the humans. And major impact of the anthropogenic activities and control of dissemination of the superbug. So as a control measure, there should be no more non-therapeutic or food additive or use of antibiotics, better sanitary condition, vaccination, prudent use of antibiotics for therapeutic purpose, not only in the humans but also in the veterinary practice. And this information about the use, about the negative effects of overuse or misuse of self-medication must be made public for the farmers, for the public and also for the policymakers. And we need a global action. Action in one area or one continent is not sufficient, as they are independent of the boundaries. So even a small part is, if not following the legislation, is not properly adopting the measures, so that we spread all around the globe. So an ounce of prevention is worse than a pound of the cure. Okay. So we have to combat the drug resistance, otherwise it will push us back to the antibiotic era and we would be not able to defeat the microbe. Thank you very much. Thank you so much, sir, to highlight facts and figures regarding recent global threats. Now I would like to call Dr. Kashyap from Department of Microbiology to share his views on antimicrobial resistance. Sir, we humbly request that we have short time duration and kindly please राहील बाबे इसे फुल स्क्रीन कर लो मेरे ऊपर बटन आएगा फुल स्क्रीन का Thank you very much. I am Dr. Kashyap from the Department of Microbiology and I am working as assistant professor over here.
after all the discussion from the distinguished guests and the other colleagues, I would like to take only 5 minutes for a general discussion on the whole topic. इसमें जो जनरल एक अंडरस्टैंडिंग सारी टॉक को सुन के मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका रोल, जैसे ये जो आज का फंक्शन है या आज का जो प्रोग्राम है ये डिजाइन किया है डीएम के स्टूडेंट, डीएम का जो वो सीनियर सेमेस्टर है, आई वुड लाइक टू गिव एन अप्लॉज फॉर देम. At the same time, we have the microbiology students over here who are quite relevant to this particular topic. And from the health sector, we have our distinguished guest. So, when we summarize this whole talk, so what we get it, that is each sector has to play its role. For example, veterinary sector, they are going to prescribe medicine for the animals. For the human side, the physicians, they are going to prescribe medicine in case of human beings. And at the same time, when we talk about the anti-microbial resistance monitoring, so microbiologists can play their role very significantly. So I would like to just comment on this first slide, and with that I would like to conclude my talk. That I have taken this screenshot for the antimicrobial World Anti-Microbial Awareness Week, which has been presented by the WHO website. और यहाँ पे जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ पे एक सर्जन जो है, she is going to perform a surgery, and before going for the surgery, she is disinfecting her hands. This is very important in case of surgical setups because the microbes. Can you go to the next slide, please? Next page. Here I have shown a needle which is used for a string needle which is used for giving injections. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसके टिप पे कुछ माइक्रोब्स अवेलेबल है. और डिस्पोजेबल जो आपके पास इक्विपमेंट होता है that is definitely free from the contamination, but once there is a practice in certain cases, जैसे हमारे रूरल एरियाज है वहाँ पे रीयूज भी होता है. और माइक्रोब्स ये सरफेसेस पे भी अवेलेबल हैं, एयर पे भी हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके नॉर्मली आप यूज करते हैं फॉर द इंजेक्शन, दे कैन आल्सो बी कंटामिनेटेड. सो जब भी हम बात करते हैं एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, उसमें हर एक को अपना रोल प्ले करना है. वेटरिनरियन है, हाउस माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ह्यूमन सेक्टर से है, ऑल हैव टू प्ले एंड जॉइन हैंड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दैट इज माय मेसेज. थैंक यू. And with that, I would also like to add this particular setup which has been displayed over here. This was performed by the microbiology semester students. And in this over here, I would like to demonstrate a little bit that we use two types of antibiotics. One was the combination of sulfamethoxazole and trimethoprim, and the other was amikacin. And in case of amikacin, we have got this susceptibility, but in case of the combination, which was quite effective when I was graduating, this antibiotic was quite effective against the lung infection in case of animals. But here you can see a clear kind of resistance in this case. So this was for the demonstration, if you want to look at it. And in this particular culture, we got the bacillus bacteria over here. So bacillus is very important when we have to monitor the environment especially. अब bacillus एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि environment में abundantly available है. Soil में से भी आपको मिल जाएगा, waters में से भी आपको मिल जाएगा, और बाकी आपकी जो surfaces हैं वहाँ पे भी ये normally abundantly available होता है. इसको हम as an indicator use कर सकते हैं if we want to monitor the antimicrobial resistance in case of environment. So this was a very good effort made by the microbiologists. And I would like to acknowledge that. Thank you so much, sir, for your immeasurable contribution in today's event. Now I would like to call Dean Dr. Mazhar Yasser from Faculty of Veterinary and Animal Sciences to come on the stage and share his views. So
so that we can further proceed to the next event of the seminar. Thank you. Dear students, आज का जो हमारा ये सेमिनार था, ये अगर मुमकिन हुआ है तो आप स्टूडेंट्स की एफर्ट की वजह से हुआ है, और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत से इसको ऑर्गेनाइज किया है। और ये अगर मुमकिन हुआ है तो हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर शिप्रा साहब, उनकी वजह से हुआ है, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर वाजिद साहब तशरीफ लाए और उन्होंने हमारे इस इवेंट को कामयाब किया, और हमारे फैकल्टी मेंबर्स और जो इस टीम में बिहाइंड द सीन काम करते रहे, उनने इसको कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत की है। और मैं ये चाहूँगा कि आप उन लोगों के लिए बेहतरीन करें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसके बाद हमें फिर पोस्टर सेशन की तरफ जाना है, वॉक करनी है, वो भी आप लोग इसमें हमारे साथ होंगे। और इसमें हमारे स्पीकर्स ने जो आपको एक समरी मैसेज दिया है वो ये है कि आप खुद अपने घर में जाके, अपने दोस्तों को जाके, उनके पास जाके, अपने जो और आपके इंटीमेट्स हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उनके सर्कल में जाके ये बताना है कि आज हमने ये तहैया कर लेना है कि एंटीबायोटिक को खाम नहीं खाना जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो। अदरवाइज हम अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को एक नए मर्ज की तरफ दावत दे रहे होंगे कि हमारे जिस्म में दो किस्म के बैक्टीरिया हैं, एक अच्छे और एक बुरे। एंटीबायोटिक में ये तमीज़ नहीं है कि वो आपके अच्छों को छोड़ दे और बुरों को मार। तो हम जब कोई मेडिकेटेड शैम्पू, कोई मेडिकेटेड सोप इस्तेमाल करते हैं, कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हल्की सी छींक आई और हमने जनाब कोई पैनाडॉल के बजाय कोई सेफ्ट्रॉन की या कोई और गोली खाना शुरू कर दी, तो इस चीज़ को हमने डिस्करेज करना है अगर हमने अपने आप को, अपनी आने वाली नस्ल को बचाना। तो हमारा आज का मैसेज ये है कि हमने एंटीबायोटिक्स को ग़िज़ा के तौर पर नहीं खाना, और उस वक्त खाना है जब हमें उसकी ज़रूरत हो, और वो भी उस वक्त जब उसकी वाकई ज़रूरत हो। और वही मेडिसिन खानी है जो कि हमारे वो बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों को मारे, जो हमारे डॉक्टर्स या हमारे टेक्नीशियंस या हमारी लैब से प्रिस्क्राइब हो। थोड़ी सी इसमें मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन उससे हम अगले आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचें। तो ये मेरा मैसेज है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सब्र से और बड़े इत्मीनान से और इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं अपने प्रोफेसर अब्दुल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर तस्वर अली शाह साहब, मौसम साहब और हमारे दूसरे फैकल्टी मेंबर्स हैं, और आप सब लोगों का कि आप लोगों ने इसको कामयाब किया। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस एंटी माइक्रोबियल वीक को अगर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट इसको पूरा हफ्ता ही बेशक 1 घंटे के लिए सेलिब्रेट करे, और पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स भी अगर उसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करें तो हमें इसमें और ज़्यादा खुशी I would like to call the Faculty of Biosciences to come on the stage and present the token of appreciation to Dr. सारी बातें जो डॉक्टर मदर साहब ने कही है मैं उनको ट्रांसलेट कर देता हूँ। I would like to appreciate the effort made by faculty members and as well as by the students to make this event very successful, and I think such type of activities should be continued on a regular basis because the awareness is more necessary than the operations, physical, surgical, social operation. और आखिरी वाली बात भी जो हमारे माशरे में खाम खा की एंटीबायोटिक और खाम खा की कसमें खाने का वो रवाज है, उसको हमें अब कम कर देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यही आज का टेक होम मैसेज है।
कि बगैर सोचे समझे दवाइयाँ देते कितना लोगों की, और बगैर सोचे समझे दवाइयाँ खाते कितना लोगों की जगह की, वो हमारे माशरे को तबाही से नहीं बचा सकते। So, for a token of appreciation, I would like to thank and I am grateful for Dr. Vajra Singh sir to spare precious time for this awareness seminar and for this future awareness of antimicrobial resistance. So we would like to present a shield in his honor.